Hi, Chiclet. The fact that I'm recording this message is a reflection of our love for you, and you know how special you are. Otherwise, we don't get bullied into doing these things. You have always been special, not only because you were our first nephew, but because you are the son of my very, very, very special Benu. So, here is wishing you all the best from both of us and lots of love. Hope God gives you a good life. Bye. हाय चीकू, तेरे बारे में मैं सोच सोच के थक गई कि तेरे को मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं। तू इतनी सब चीज़ें, इतना सब कुछ ध्यान देता है सबके लिए, सबकी तरफ इतना वो करता है। हम तो बहुत फॉर्चुनेट है टू हैव अ ब्रदर लाइक यू. So it's just a same plain simple wishing I'm doing. Please take a moment to listen to me. Here's to wishing you happiness, to welcome every each morning, wishing you the laughter to make your heart sing, wishing you the friendship, sharing and caring, and all of the joy a birthday can bring. May each and every moment of your day be filled with the same joy and happiness you bring to others. Wishing you a birthday full, beautiful day, many blessings for your year ahead. May the next 25-30 years be as good and fun filled as ever. Happy birthday, little brother. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाजी। इस पे इतने खुश क्यों है भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल धूप से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजामत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेलने, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर में मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के 1:45। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी। अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुढ़े हो गए ओ तेरी। दिल छोटा ना करो, उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और मेरा शुभ आशीर्वाद है कि तुम बहुत बहुत, मेरा शुभ आशीर्वाद है कि तुम बहुत बहुत तरक्की करो। Hi Chikol, happy 50th birthday. We're looking forward to celebrate this with you in Jaipur, but coronavirus has cancelled our program. Maybe next year, 51st birthday, we'll come to Jaipur and celebrate together. Bye. Cheers. Hi Chikul, you're 50 years old. Wish you a very, very, very happy birthday. And you mean a lot to us. You really mean a lot to us. You're our connectivity to Jaipur. Like, we know at the back of our heads, we can just walk into Jaipur and come to you. Come and stay with y'all. And you're such a warm hearted, compassionate person. I am really fortunate to have such a wonderful brother like you. And I wish you the very best. I wish you complete happiness and whatever you want, all your wishes, everything is fulfilled. Enough now. Life begins at 50. Life begins at 50, Chikul. Come on, enjoy yourself and move on in life. Yeah. And I really thank you so much for always being there for us. All of us, Vikram Jijaji, Priya, Bebo, they have such a connection with you. So thanks a lot for all that you have done for us.
Hi Chikul, can't believe you're turning 50. Hi Chikul, very happy 50th birthday. You're my favorite cousin. I still have vivid memories of that cute little naughty boy with a sweet smile. You're such a sweet, warm, gentle person, you know, and who's the glue that binds all cousins together. I enjoy reading your poems. Must say, you've become a fine poet and a shire. They're all so profound. You know, it's so good to have you around. And I wish you abundant happiness today and always. And also, the next decade be all that you wish for and even more. Cheers. Yeah, all the best, Chikul, and stay cool as you are always. Happy birthday. Happy 50th. Bye bye. Hi Chikul, welcome to the 50 plus club now. Not yet. Not for me. He's entering the big 5-0. So, fantastic. This should be a great year for you. I don't know if there was no COVID, this would have been like a mini wedding. I'm so sure you would have done something like that. And well, as for when we think of you, all good things come to our mind, from good food to a lot of warmth, affection, very personalized. Everything of yours is there's an element of warmth and love in it. Basically, a very caring person. Yeah. So, Chikul, wish you a very happy 50th birthday. Hope the years ahead are filled with joy and happiness for you. And we wish you all the best throughout. I cannot overlook the fact that your house is like a 24/7 walk-in for us, and same goes for you when you feel. I hope you feel the same about us and about our house. So let's keep it that way, and you have a fantastic year, decade, and a great life ahead. Congratulations. Happy birthday once again. Hi Bhaiya, happy 50th birthday from the Bhagdays. Bhaiya, we want to tell you today that it's your 50th birthday, and we feel special to be a part of your life. Your life, and it's really a good feeling that you have always been cool, you've always been loving and super amazing elder brother without any judgments, and that's the best part about you. And one more thing is that thank you for teaching me and us actually that nothing is more important in life than food. I think that is one quality which will always remain with us. During the time, the 1.5 year that we spent in Jaipur, Jeet knew you from the start, but I got to know you personally. And you've always been a giving person. And very warm, very loving, very welcoming. Yes, आप छेड़ते बहुत हो, but very loving. Or the times in Jaipur have been amazing and happy for us because you are also a big part of it. Thank you for everything. Thank you. And we love you and we miss you. Happy birthday once Happy 50th birthday, and it's a big milestone. अभी और 50 जाना है आपको. जाना है. Yes. Take care. And have a great day. Bye. Bye. They say cousins are your first friends, and I think it gets evident with our relation. A friend, a confidant, a person whom I can look back always, more than a brother-in-law. I think I share a very special bond. On your golden birthday, I wish you prosperity, long life, happiness and health henceforth. And I hope we continue the same rhythm in future walks of life. Good luck, best of luck. Chikul, so we are finally turning 50, and we still behave we are in our 20s. But you've always had a very special place in my life, and didn't know that this relationship or this bond will exist till we are in heaven. And God, how time has flown, from our summer holidays to schools, to friends, to doing some of the craziest stuff, and even being punished for it. I remember those late night card sessions at your house, and how we would make you repeat those filmy dialogues which you felt you were good at it, and we all would have a good laugh over it. And how you would harass Miku through those til chattas or jingurs, and blackmail her for those 10 paisa per
per Jingur. I mean, this is something I can never forget. And you eyeing at my girlfriends, and you still continue doing the same. So carry on, and you know, our relationship, I guess, even became stronger once Akanksha entered our lives. And yours is one house that, you know, I can enter as and when I feel like. It is filled with so much of warmth and love, and I'm happy your kids have also inculcated the same. So Chiku, I can just continue on and on about you, but you are one person who's loved by all, and you've stood by me through all my thick and thin life, made my birthdays and anniversaries so special, and you always have a very special regard with all my extended family and friends. So hope you have a lovely 50th birthday, and hope the years ahead are filled with joy and happiness, and all your wishes and desires are fulfilled, and cheers to the good times ahead. हाँ चीकू, हैप्पी बर्थडे। मेरे को बहुत खुशी हुई, तू इतना सीधा साधा है, तेरे को जो है जो आकांक्षा सिखाती है वैसे वैसे ही करता है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, ऐसा ही करते रहना। ओके। हेलो चीकू, हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरी पार्टी बाकी है। Hi Chiku, a very very happy birthday, a very happy 50th birthday. I can't believe my little bro's 50, all matured up and all grown up. I still see you as my little bro who has always taken care of me. You are one of the few people I can count in day and night, anytime. You mean a lot to me, even though I don't say it often. But you do mean a lot to me. I still remember our old days when we used to talk so much about everything, the boys, the girls, the stories around, how I knew each and every one of your friends, Rohit, and you knew my friends, and it was so much fun. And yes, distance has come in between, but what is the best thing about you is you have never stopped that distance come between us, and that is really sweet. Another thing I really cherish about you is how we are more friends than brother sister. Very few brothers are like the best friends, and you are amongst those. So I really enjoy that part of you. A very happy birthday, Cheeks. Again, stay the way you are. Be a poet, be a writer. You are amazing. You have shown us, you have gone through your whole struggles of your own, and you have shown us how you have come out so strong and still there for all of us. Stay the way you are, and we love you. Happy birthday again. A very happy birthday from Nitin's side too. He wasn't feeling well, but wanted to convey his best wishes to you. Love from all of us. सूरज में जितनी रोशनी हो उतनी रौनक हो आपकी, चांद में जितनी चांदनी हो उतनी चमक हो आपकी, फूलों में जितनी खुशबू हो उतनी खुशबू हो आपकी, दुनिया में जितनी खुशियाँ हो वो हर खुशी हो आपकी। वाह 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 वाह। हैप्पी बर्थडे, Happy 50th birthday. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जन्मदिन की बात काजल के साथ। तो आज हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे इस शख्स के बारे में। ये शख्स वाकई में परिवार का लाडला और यारों का यार है। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना और अपना भाग्य अपनी लगन से बनाना इनकी खासियत है। इसी वजह से इनको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। तो आओ इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दें। Hi Chacha,
wish you a very happy 50th birthday. It's so difficult to think about times, in the past because I've always been the youngest. इसलिए कभी इतना ज़्यादा close नहीं थे initially, but I think last couple of years, especially after the nieces and nephews group and everything, it's like you've become a friend of ours, especially mine, I think, because others were always older to me and always there and celebrate everything together. But past few years have actually, shown me how fun and cool you are. So even though आप 50 के हो गए हो, it doesn't seem like you're that old because you've always been so, close to all of us, all the, younger generation of the family. So here's to more fun, and here's to you getting younger with, your age, and a happy birthday to you. Hope to see you soon. Bye. Happy birthday. अब हम अमिया के नाम के हिसाब से उनकी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज बताते हैं आपको। सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा आराम पसंद है। अमेजिंग है, मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, फैमिली में और फ्रेंड्स में, बच्चों में, सब जगह पे वो अमेजिंग है। बहुत ही मैच्योर है, मस्तीखोर है, सब चीजों में मस्ती। बहुत ही आइडियलिस्टिक है, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। और इतना ज़्यादा इम्पेशेंट है कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा ना तो बस ऊपर नीचे हो जाएगा पूरी तरीके से। नाम आपको दिख ही रहा होगा, यमला पगला दीवाना। हर जगह उनके दीवाने मिलेंगे आपको, और उनकी दीवानगी की तो बात ही क्या, आप सब लोग जानते हैं। यानी अमला पगला दीवाना वो खुद भी वैसा ही है। हाँ, नेचर से भी मस्त आदमी है। कुछ भी कहो आप लोग, कितनी भी उनकी बुराई करो, बट वो यारों का यार है। लव यू अमिया, हैप्पी बर्थडे। फिर साथ में वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी हैं, इतना घूमने फिरने का शौक, सब चीजों का शौक है उनको। और उनका अंदाज जो है वो जरा हटके है। कैसे है हटके? चलो अब बहुत ही हटके हैं उनके तो। हैप्पी बर्थडे चीकू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीजा, मैरी बर्थडे टू यू। 50वीं साल के लिए बहुत बहुत बधाई। 50वीं साल के लिए बहुत बहुत बधाई। 50वीं साल की बधाई। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हैप्पी 50th बर्थडे चिकुल भैया। साथ साथ कहाँ 33 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। सोचने लगे तो पुरानी बहुत सारी बातें याद आती हैं। अभी जैसे कल की ही तो बात है, मेरी सगाई के बाद 5 जुलाई 1986 में आपकी बर्थडे पर मैं पहली बार अपने ससुराल गई थी। तब से अनौपचारिक मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा। आज भी वो पार्टी जैसे आंखों में ही बसी है। फिर तो सिलसिला जैसे चल ही पड़ा बातों और मुलाकातों का। बिज्जू चाचा और नीरा चाची के स्नेह के साथ कहाँ दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। होली पे शिन्नी के आने से पहले वो आपका और शैलू भैया का बॉटल वाला गिफ्ट, और बाद में चाची जी के ऑपरेशन वाला पीरियड जब हम साथ ही रहे थे। देर रात तक ताश खेलना और खाने में वो आलू प्याज की और प्याज टमाटर की सब्जी की छोटी छोटी फरमाइशें भूलने योग्य नहीं हैं। तब से आप और मीकू जी मेरे ननद देवर कम और दोस्त ज़्यादा हो गए। आपके नाना जी के यहाँ जाने से सब घबराते थे, पर मुझे तो वो मेरा मायका ही लगता था। जब नाना नानी की वे छोटा स्नेह भरा निमंत्रण, संध्या मीठी कड़ी बनाई है, ऑफिस से लंच करने यहीं आ जाना, आर रियली ट्रेजर्स ऑफ माई लाइफ। शादियों में, काला किट्टी में और वैसे ही कभी कभी देर रात तक बातें करना भूलने की बातें नहीं हैं। चाची जी के वो बेवक्त चले जाने का दुख, वो सूनापन हमने साथ में देखा है। फिर आकांक्षा का घर में स्वागत, और फिर हौले से मोहक मानवी के आने से फिर घर का रोशन होना। शिन्नी की शादी में चंगू मंगू का वो मिलकर उसको यादगार बनाना।
पापा के कैंसर से जूझना मेरी याद में सुख दुख का कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब हम साथ नहीं थे। आज आप 50 साल के हो रहे हो तो ऐसा लगता है कि दोस्ती का वो रिश्ता और भी गहरा हो गया है। चाहे कितने भी दूर हम रह लें पर प्रेम वही 1986 वाला पुराना ही है। आने वाले वर्ष आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएं वे आप सदैव यूं ही खिलते मुस्कुराते रहें, मेरी यही मंगल कामना है। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हाय भैया, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 50th बर्थडे। बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप 50 इयर्स के हो गए हो। आप काफ़ी यंग लगते हो, दिखते हो। बट हाँ, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस चांस टू टेल यू दैट how important you are. I think you are the most loving, caring elder brother that I have. And I don't remember कभी भी मैं जयपुर में आई हूँ and you haven't took out time to come and meet me. I think मेरी जयपुर की विजिट्स इनकम्प्लीट होती हैं आपसे मिले बिना। एंड यू हैव मेड श्योर कि कहाँ पे भी कितना भी शॉर्ट नोटिस हो आप हमेशा आके मुझसे हेलो ज़रूर करते हो। एंड मोस्टली मेरी मेमोरीज़ आपके घर के ब्रेकफास्ट के ऊपर है, जब हमारा फैमिली गेट टुगेदर टाइम होता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ऑल दोज। भाभी के हाथ का यम्मी ब्रेकफास्ट और घर वालों के साथ में चिट चैट, कितने फ़न टाइम्स थे। बहुत टाइम हो गया वो सब किए हुए। पर एनीवे, टीज़ करना आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, तो इसलिए बोलने का मतलब नहीं, पर वो भी फन है। थैंक यू, वी आर ऑल ब्लेस्ड टू हैव यू अराउंड and wish you a very very happy birthday and wish you happy and healthy and blessed years ahead. Bye, miss you. Hi Mama, wish you a very happy 50th birthday. Mama, few things which we remember about you whenever we think of you. पहली चीज, एक रंगीला इंसान। I can't imagine you are 50. आपने तो अपने भांजों को भी कितना पीछे छोड़ा हुआ है। एनीवेज, दूसरी बहुत ही अमेजिंग चीज जो दिमाग में आती है जब भी आपके बारे में याद आती है इज योर सो कलरफुल एंड विविड ड्रेसिंग स्टाइल which always reflects so good the overall personality of the person beneath it. और तीसरी चीज is your attitude and your helping nature. Whenever we have anything in Jaipur, you are our go-to person. We always seek advice from you, and you always make sure that we get the right thing on time. We look forward to meeting you in Jaipur soon, Mama. Remain the way you are, irrespective of circumstances. Cheerful, full of life, and bindas. Happy birthday once again. We hope to celebrate your 51st birthday together in Jaipur. Take Bye. care. Bye-bye. नमस्कार। आज हमारे चिकुल की 50वीं वर्षगांठ है। जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चिकुल भाई, आप बिल्कुल पापा मम्मी की तरह सभी के साथ कोऑपरेशन रखते हैं। आपका जो मस्त मौला अंदाज है वो हम सबको भाता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मात्र आप 18 साल के थे, लेकिन जो इन 18 सालों के बाद जो प्यार और स्नेह आप लोगों ने हमको दिया, हम तहे दिल से जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं तो यही बताता हूँ कि किट्टी जब होती है तो बिना आपके अधूरी है। आज जो किट्टी में जो हलचल होती है, मौज मस्ती का माहौल है, सब आपके साथ है। मैं तो आज आपके जन्मदिन पे 4 लाइन छोटी सी सुनाऊंगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द दिल मिल सके न खुदा, किसी के वास्ते हो दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Happy birthday, Chikul.
चिकुल बाबू, आप जब शादी करके आकांक्षा को लाए तो हमारी भी बहुत बहुत आकांक्षाएं के साथ सहयोग की भावना आप में बहुत ही बढ़िया जगी है, क्योंकि हर पल आपका और आकांक्षा का जो प्यार हमको मिलता है उसका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं और पुनः जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। Hi Chacha, a very happy 50 to you. बुड्ढे हो गए हो यार. On your special birthday, I want to let you know that I really cherish the relationship that we share, not just as your niece, but as a friend that you've always been to me. I cherish all the wonderful moments and memories that we have made together, and I'm looking forward to make many, many more with you and celebrate many more birthdays with you. I will never forget the dance we did together. Sending you the warmest wishes on your big day. A very happy birthday. नमस्ते मामा, आपको 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यकीन ही नहीं होता कि आप 50 साल के हो गए हैं। मतलब जब भी आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे कोई दोस्त है, कोई हम उम्र है जिससे शेयर कर रहे हैं सारी चीज़ें। और जब भी हमारा जयपुर आने का प्लान होता है तो हमेशा ये बात तो होती है कि चीकू मामा से तो मिलना ही है, चाहे डिनर पे मिलें या फिर डिनर के बाद मिलें। तो बहुत ही अच्छा समय कटता है जब आपके साथ होते हैं। तो ऐसे ही सबको खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए और प्लान बनाइए ऑस्ट्रेलिया आने का। आपके साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे यहाँ पे भी, अब दिखाएंगे यहाँ पे। बाकी बस वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे मामा, कांट बिलीव इट्स योर 50th। आपसे शायद पहले कभी ये कहा नहीं है, लेकिन आप हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल प्लेस है। आपके साथ मिलके कभी भी ऐसा नहीं लगता कि सालों हो गए मिले हुए, हमेशा ऐसा लगता है कि शायद कल ही मिलके चुके थे। जो फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है वो इतना प्यारा और इतना मजाकिया होता है। आपके साथ जो भी रिलेशन है, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट रिलेशन ऑफ मामा एंड भांजी, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंड। सो इट्स such a great feeling to have you in our lives. Thank you so much. Hello Chiku, many happy returns of the day. अरे तो 50 साल का हो गया, ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी तू पैदा ही हुआ था। What I remember most about you is you were the first child जिसको मैंने गोदी में बहुत खिलाया। जब तू छोटा था और हम लोग जब जमनालाल बजाज मार्ग शिफ्ट हुए थे तो मेरी गोदी में बहुत खेलता था। और तेरे को ट्रेन देखने का बहुत शौक़ था, तो सिविल लाइंस की जो क्रॉसिंग है वहाँ पे मेरे को लेके चलता था। मैं तेरे को गोदी में ले जाता था और तू इशारे से वहाँ तक खींच के मेरे को ले जाता था और बोलता था कुकू कुकू। एंड यूज्ड टू एंजॉय सीइंग द ट्रेन पास बाय फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग। ओवर द years we know that you have had a tough time. Niruben's illness initially for so many years, and then Jijaji's illness. But despite all that, you kept yourself so composed, and you were so jolly and friendly with everybody in the family. You were the लाडला of the family, and किसी को भी कभी भी कुछ भी काम होता था तो वो चीकू कर देगा। स्टेशन किसी को लेने जाना है तो चीकू चला जाएगा। So everybody used to love you so much, and they still do. Everybody loves you still so much. So on this special day, I wish you all the happiness, joy, prosperity, good health, all the best, happy birthday, and nice time to come ahead. Bye Chiku. Happy 50th birthday Chiku, many happy returns of the day, wishing you all the best always. Happy birthday Chiku, all the best and happiness forever. चिकुल वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे ये कोई आम बर्थडे नहीं है, दिस इज अ वेरी स्पेशल बर्थडे। क्यों भाई, क्या हो गया आज? 50th बर्थडे। ओह 50th, बाय गॉड। चिकुल के बारे में लगता ही नहीं इतना बड़ा हो गया ये, तो अभी भी मन में ऐसे ही आता है, छोटा बच्चा है ये तो। पर इसकी हरकतें अब ठीक हो रही हैं, पहले जितनी बच्चों जैसी नहीं रही है। पर यू आर ए ग्रेट पर्सन चिकुल, मज़े कर खूब। 50th बर्थडे है और तेरे जो हंसी खुशी शौक महफिल जोड़ने का काम ये कायम रहे। अरे ये क्या शेरो शायरी में भी बड़ा माहिर है,
आपको ये पता नहीं, खूब अच्छी नहीं, शायरी नहीं। भी लिखता है। नहीं लिखता, शायरी भी लिखता है, शायरों को इकट्ठा भी करता है, शायरों के शौकीनों को भी इकट्ठा करता है, ये तो कमाल करता है। तो चिकुल 50th बर्थडे इज़ अ न्यू बर्थ, रिमेंबर दैट। जो अब तक सब नहीं किया ज़िंदगी में, जो करने के ख्वाहिशें हैं, अरमान है, वो बस अब पूरा कर ले, शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। लव यू, टेक Love you. केयर, Happy birthday. enjoy the day, enjoy the year, bye. Have a wonderful year. A very, very happy birthday to you, Jetji. Have a fantastic life ahead. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके लिए सबसे ज़रूरी व्यस्त रहें। ना आसमान से टपकाए गए हो, ना जमीन पर गिराए गए हो। आजकल कहाँ मिलते हैं आप जैसे भाई, आप तो आदर से बनाए गए हो। 50th, congrats on reaching another milestone, Priya. A trip to Europe or another marathon. What's next? Wish you a very happy adventure trip in the coming year. Hi Chacha, wish you a very happy birthday, and not just birthday, wish you a very happy 50th birthday. It's your golden birthday actually. Still can't believe that you're turning 50 now. Maybe it will be right to say that you might be, it's just a number, basically the 50, you're getting 50, but you still give a feeling as if you are still just 30. So I remember, when I was a kid basically, so I definitely can't say anything about what you did when you were a kid. Of course, I can sense that you would have been a very notorious and playboy sort of a guy in your childhood, of course, because that's how your personality is, and that's how charming and how smart basically you've been throughout. So if I recollect some stuff from the younger days of mine when I was pretty small, and I still remember you used to come to you basically used to visit us every day for lunch for quite a few days, and that was a time I remember that you used to bully me a lot, and I'm sure, and at that point in time I guess not just me, or rather I was the only guy who was pretty small, and I was the only nephew you had at that point in time whom you could bully actually. I still remember, you've been very harsh for kids, and I used to remember at that point in time that when Chacha will get married and when he'll have kids of his own, how would he treat them? Will he still be so much annoying and so much disturbing to them? Because whenever you used to come up, I used to feel really scared. Maine kaha, Chacha's come up now, and again he'll do whatever possible, and I'll start to cry. But yes, things did get changed when you basically got married to dearest Akanksha Chachi, and then basically we had Mohak and then Manvi. You've changed, of course, you definitely have changed. Moving around from the younger days of mine, eventually when I also started to grow up, and then you got married, I basically was able to feel the change after that time, when it was not more of a nephew or a Chacha sort of a relationship. It was more of a friend kind of relationship that I've always felt with you. So and then your utmost love for food. You've been sort of a guy who've been always been loving to have different dishes wherever wherever you basically have been trying to go, be it some place in Gujarat, be it some place in Mumbai, be it some place in anywhere across the world, be in Kolkata or being in Ahmedabad as well. I can still remember then we had visited us, then we went out to have a feast on different stuff, and to the food park which you loved a lot. And of course that ice candy of Asharfi, and the I guess there were some sharbat bottles that you picked up from there, which you really liked a lot. So of course this is one of the very common qualities that I share with you. Even I'm a great foodie and love to go out for dinner and go out for
anywhere wherever it is possible to have some really mouth-watering stuff with you. And of course, getting down to that foodie stuff, your tummy is basically bulging out now. So try something out to control that. You'll again, look more younger than what you normally look right now. Of course, yes. Coming back to small stuff, wherein though I have never had some sort of a position wherein I really have needed you, but yes, what I could feel like is that you were kind of a person who's very generous, and I can feel it whenever we've got any get together, whenever we've had anything, any function, basically, even if it is a picnic, or we are moving out for a trip somewhere. So you were the one who basically being into the organizing committee, and you have always have led from the front actually. So have always enjoyed all sort of a trips when we used to go together, with entire family, be it to Mahavirji, be it to anywhere else as well. Though it's been good 10 years for us now since we've been away from Jaipur. But yes, of course, I miss out on all those family get-togethers, and actually being in the company of you, which always makes it so special. Next point that I have written up. Yes, I guess I've covered up all. And yes, one most important part that I didn't cover up is your love for Shairi, which is basically what I'll say, that you are the kind of person whom I could never imagine that he can be a Shair anytime. But yes, you've grown up with that, and over the past few years, you've actually started to gain expertise on the same. So I really love to see you grow more into the same profession. Keep writing better poems, keep thinking better, keep imagining better, so that you are you become better in the game altogether. Last of all, I would just say I've just been a delight. It's just been a pleasure. It's just been indeed a privilege for me to have you as my chacha. Really love you a lot, and of course miss you guys, you, Chachi, Bua, Mohak, Manvi, miss you guys a lot. Being here alone. So we are only the 4 guys who've been living our life for quite some time alone here in Ahmedabad. So we miss out a lot being with all of you, but that's what the life is. That's how it is. For the career, we need to move on. Once again, I would just like to say, I wish you a very happy birthday, and hope it is the best one that you've ever had. Love you so much. Please take care of yourself and everyone back home. Love you a lot. Happy birthday again.